डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। सो आज हम एक ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी की बात करने वाले हैं और हम बात करें हमारी जो बेटिया है करीब चौधरी, उसके बारे में लेकर, बच्चे के बारे में लेकर। बच्चे को NRI स्पॉन्सर सीट के अंदर राजस्थान में जो है कॉलेज मिला है कोटा। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माना जाता है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। सो ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज हम खास तौर पे आपके सामने लेकर आते हैं। सो आज हमारे साथ हैं करीब के फादर अजय जी। सो हम अजय जी मोस्ट वेलकम एंड मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू एंड टू द एंटायर फैमिली। Thank you so very much. It was kind of an eye-opening experience being with you and getting this entire process done. So thank you so very much. Congratulations to you too. You have become part of the family. That's the first thing I wanted to definitely share. It's no more my own family. You're part of the family. Thank you. About me, I am part of the education industry only. I work with FITG Limited. I've been working with FITG Limited, but it's more into engineering coaching. So I've been working with them for, I think, more than 2 decades. Not as a teacher, more as a managing person. And yes, my daughter Kareeb always aspired for medicine and had worked hard also, but somehow कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है कि एक right government college was my target. I always wanted to get to a government college. तो वो qualify उसके लिए नहीं किया. आई थे offers, she had done good, but then government colleges were cut off so high जाता है. It's kind of at times very difficult to get through. Right. That's where we were not even aware of there is something called NRI. So somewhere we got in touch with one of Kareeb's friends. She has been your student, your client in the past. You had helped her. And actually my wife talked to that student's mother. One feedback we got was that you have a personal touch. You treat every student as kind of your own. And we can see, and that was my experience also with you. We can see the care, the concern you had about everything which is happening in the process. So that gave me a confidence. Yes, Amrit is the guy. MCMF is the right person to kind of bank on. And thankfully, I only banked on you. I was advised by many people to यार 2 लोगों को लो, 3 लोगों को साथ में रखो, किसी से भी हो जाता है. But then vibes अच्छी आई आपसे. So you were the only one which we banked upon and embarked on this journey of admission through NRI Quota. When we went into this, that was another shock. कितने documentation, कितने attestation, कितने it was like I think Neetu spent a lot of time only getting into those affidavits done and notarizations done. But one good thing was that we were always clear what we have to do. Right. We were very clear, very meticulously. It was kind of explained. In fact, I remember we had done in your office, we had done a rehearsal also. कि ये sequence में ये document लगेंगे, पुरानी file लेके. We did all that stuff. So it was a journey which was hugely facilitated by you. Otherwise it would have been pain. And that I saw जिस दिन हम document verification के लिए गए. I saw it that day कि preparedness का कितना value था. वो जो हमने rehearsals किए थे, जितना हमने कि कोई भी document मांग सकते हैं, रख लो. And that knowledge that you had about what all the possible things that can happen in the process, that came handy phenomenally that day. I could see many parents struggling. ये document कहाँ से लाऊं, वो कहाँ से लाऊं. It was a chaos there. Government setups, even though improving, but then they're still chaotic. They're still chaotic. जो जी प्लीज कंटिन्यू सर. मैं यहाँ पेरेंट्स को भी बीच में ले लेता हूँ, जो भी पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी, कि जैसे अजय सर ने मेंशन किया कि वी डिड रिहर्सल्स. नंबर 1 बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ह्यूज एक्सपीरियंस इन NRI. सो एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें पता रहता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, और ख़ास तौर पे कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट इंडिया से चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट बाहर से चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है. बिकॉज जब हम गवर्नमेंट सीट्स के लिए जाते हैं NRI कोटा के लिए, सो अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दे आर वेरी पर्टिकुलर. और जैसे अजय सर ने मेंशन किया कि जब हम वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गए, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखा हु वर बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, राजस्थान से बिलोंग करते थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज नहीं थी, और वो बेचारों के जो डॉक्यूमेंट का जब वेरिफिकेशन का पार्ट था वो रिजेक्ट हो गया.
और it's not only just rejection of the document, it is basically losing a big opportunity. आज हम सेकेंड राउंड में बैठे हैं अजय सर, मैं आपसे मेंशन करना चाहूँगा जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे अजमेर और कोटा जिनकी हम बात करें, जिसमें हमारी बच्ची को भी एडमिशन मिला कोटा के अंदर करीब को, वहाँ पर आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 6 सीट बची हैं, राइट। सो वो पेरेंट जो आज की डेट में जो सेकेंड राउंड के अंदर जाएंगे और अगर वो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते और किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको दे विल नॉट गेट एनी सीट इन दीज प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, ना RUHS में, ना RNT में, ना अजमेर में, ना कोटा में। सो ये बिकॉज हमने फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छी तैयारी की थी और हमें पहले राउंड में ही वो मिल गया। आज अगर सेकेंड राउंड में होता तो वो हमें नहीं मिलता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मतलब it was an amazing experience, particularly with you yourself being there along with your team. So it was virtually for us too. It was a cakewalk. Right. For us too, it was a cakewalk in the sense कि मतलब hardly it took us probably half an hour, 45 minutes, not more than that, including the waiting period. And अंदर जाके it took us 5 or 7 minutes, at the most 10 minutes, not more than that. जहाँ लोगों को 5 चक्कर कटते थे, आधा घंटा, और still they were getting rejected. So yes, that was an amazing experience. That was an amazing experience. Right. मैं यहाँ पर पेरेंट्स को कुछ बताना चाहूँगा क्योंकि जो हमने पिछला वीडियो हमने शूट किया, हमारी जो दूसरी बच्ची अनुषा जिसको अजमेर मिला था, सो उनके फादर से मैं जब बात कर रहा था, सो ही सेड दैट प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेंट लाइक अ ब्रीज। सो कब आया कब गया, एक हवा के झोंके की तरह हमें पता ही लगा, बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड। सो दैट प्रिपरेशन इज राइट, प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद दी गुड हेल्प, एक काउंसलर की हेल्प से वो बड़ा ईजी हो जाता है। एंड देन सर फाइनली व्हेन वी गॉट दिस कोटा वाली सीट हमें मिल गई। सो क्योंकि that was a pleasurable thing because I know you were right from day one looking at all those things. You were probably building managing expectations also, which was right on your part to do. We were more thinking in terms of कौन सा था वो, झालावाड़, right. Jhalawar, Bharatpur यहाँ होगा, and we were actually I remember because I know some people in Kota, so I had this requirement, 2 requirements. One, Kota college is better. 2, Right. Kota is a place where I have resources which can always come handy. So I remember I was kind of desperate to tell him कि boss जैसे भी करना है Kota करा दे मैं. I need Kota. And you were always telling me 20% chances of Kota, 80% Jhalawar. So when Kota came in, it was like a big relief for the entire family. Right. जी। सो मैं यहाँ पर जी यहाँ पर राइट यहाँ पर भी सर मैं ऐड कर देता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि विद द एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड दैट कौन से कॉलेज में ज़्यादा हमारी अपॉर्चुनिटी या ज़्यादा हमारे चांसेस हैं, बट लुकिंग एट दैन क्लोजली जब हम उसको मॉनिटर करते हैं, अगर एक हाई होप सेट कर दें पेरेंट्स की तो बाद में वो क्रैश हो तो बड़ा होता है। I understand that and I appreciate that. I appreciate that also. Right. कि वो खुशी शायद अगर डे वन से हमने आपने बोला था नहीं जी कोटा ही करा दूंगा और कोटा होता, तो जो खुशी कोटा होने पे हुई वो शायद नहीं होती, वो शायद महसूस नहीं होती, राइट, महसूस नहीं होती, no doubt about that. So it was a very happy moment for the entire family. We were like virtually jumping up to okay Kota, yes Amrit has done it. It was something of that kind of an expression at that point in time. थैंक यू सो मच सर। ये भी अगेन जो है विद द एक्सपीरियंस ही, देखो हम हर आदमी अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज होती हैं उनकी, आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, सो एक आइडिया रहता है ये। The most interesting part about that thing was कि I remember we had a time, I had some time concern कि मुझे उसी दिन जाना था, which was probably a Saturday, बैंक बंद थे, तो मुझे फ्राइडे को फीस का DD बनाना था, और फ्राइडे आई थिंक आफ्टरनून तक उन्होंने फीस अनाउंस नहीं की थी, एंड आई वाज कॉलिंग यू एंड यू वर ऑन टू द थिंग. So I remember it was such a process that happened that you gave me a figure around I think 3:30, 3:45. Yes. I had lined up with my bank कि यार मैं late बनाऊंगा. So just call them up. They got that DD done. Then they changed a name, the banker's name. Yes. So amazing part was you were getting updated about the information what's happening there live. Right. The moment that happened, you immediately called me. DD was almost all getting ready कि नहीं नाम बदल गया है. So I didn't call the bank. Right. Otherwise, I was just imagining. Otherwise, अगर वो DD पूरा बन जाता और मुझे फिर अगले दिन पता चलता वहां पहुंच के कि जी नाम गलत है, I would have been in a mess. Right. I would have been in a mess. Right. So
जी Looking at the kind of situation government setup में भी होता है, you had that promptness in terms of you had that inroads into the information. कि वहां जब डिसाइड हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही थी. आई एक्सपीरियंस्ड इट लाइक दैट डे एंड यू वर प्रॉम्प्ट इनफ टू पास इट ऑन टू मी so that I could take action. So that मतलब it was a miracle that day कि वो रात को 6:30 शाम को मेरा डीडी बन के आया है. That in itself was a miracle. Of course, miracle backed by your promptness and your expertise in terms of getting the information at the right time. And next day, when we reached there, again your team was there. So again, I would say it was where I could see people were questioning everybody's document. Students were getting hazard. बाहर जाके वो बनाओ, ये बनाओ. वहाँ लाइन लगी थी वो affidavit बनाने के लिए and all that stuff. For us, it was much more comfortable and smooth. And राइट again, the only reason for that was preparedness. यस 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 That वेरी was मच the राइट only सर जी जी preparedness. We were ready. Our documentation was impeccable. Even if I had the knowledge about NRI, this process, there is this NRI quota and stuff like that, I'm sure I would not have been able to run through that process because it's too complicated. The biggest complication in this thing is that you have to get certain things from the embassy where the NRI is staying. You have to get certain documents attested from that country. Then you have to get many documents attested here, and all that complications are there. And embassy and government stuff does take time. It does take time. So if not prepared, you don't have last moment chances. यहाँ कोई जुगाड़ नहीं हो सकता last moment पे चल मैं भाग के उससे पेपर बनाऊं क्योंकि किसी embassy ने भेजना है. बिल्कुल So I really don't think anybody can do this, go through this process on their own राइट जी without a जी right counselor, without a जी right person who knows the process. It's more about having the, like you said, expertise. So I always recommend if somebody is looking for an NRI quota, definitely, you would need a counselor. And my experience is NCMF is my experience has been elating. It has been delightful with these guys. They have been there, and like I said in the beginning, also, no, they become part of my family. थैंक यू सो मच सर और बिल्कुल जो आपने बोला व्हेन वी कनेक्ट विद द मेंबर विद द फैमिली सो ओवर द पीरियड एक हमारी बॉन्डिंग इस तरह से डेवलप हो जाती है बिकॉज वी फॉर्म अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑन डेली बेसिस वी कीप ऑन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो अपडेट्स ऑल्सो पूरी इस जर्नी में क्योंकि हमें ये होता है कि ये बच्चा हमारा अपना बच्चा है किसी भी तरीके से जो हमें जो गोल है हमारा वो हमें अचीव करना है ये हमारे बच्चे का एडमिशन जो हम सोच रहे हैं वहाँ पर टारगेट हमारा वो होना चाहिए सो एक फैमिली एक बॉन्डिंग ऐसी डेवलप हो जाती है अजय सर कि मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू द पेरेंट्स ऑल्सो हु आर वेरी सपोर्टिव व्हेन एवर वी शेयर विद देम कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड सो इमीडिएटली वो डॉक्यूमेंट्स फिर हम इकट्ठे करते हैं फिर उनको वेरीफाई करना कि हाँ जी जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया वो सही है कि नहीं है वो सही है कि नहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है क्योंकि जो लास्ट मिनट पे जो आपने बोला कि लास्ट मिनट पे वहाँ पर पहुँच जाए क्योंकि 2 दिन का 3 दिन का टाइम मिलता है वहाँ पर पहुँच जाए और वेरिफिकेशन में तो सिर्फ 1 ही दिन का टाइम है वहाँ पर पहुँच जाए और पता लगा कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकल आई चाहे एक एम्बेसी की स्टैंप भी कम क्यों ना निकल आए या अटॉर्नी की स्टैंप क्यों ना निकल आए दे विल रिजेक्ट द डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट्स आर रिजेक्टेड सो काइंडली प्रोसीड दैट इज द एंड फॉर द जर्नी उस टाइम कुछ नहीं होता उस टाइम कोई कुछ नहीं हो सकता सो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने देखे भी हैं सो सर वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द फैमिली फॉर सपोर्टिंग अस ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम ताकि हम अपने उस पूरे मिशन को थैंक यू सो मच अमरीश जी आपने you have enabled the realization of a dream of a family. थैंक यू I सो वेरी can't मच thank सर you enough. I can't thank you enough for that. सर इट्स आवर प्लेजर आपके इन काइंड वर्ड्स के लिए एंड आई होप कि जो ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी एक लेसन होगा एक टीचिंग की तरह काम करेगा ये वीडियो कि कैसे इन डॉक्यूमेंट्स का या कैसे इन चीजों का कितना बड़ा रोल है कैसे एक एक मिनट का No, एक एक राउंड का रोल है एमबीबीएस के well, you एडमिशंस का hardly get any time. You hardly get any time. Timelines are राइट so tight that अगर prepared नहीं होंगे जी and you have no chance then. जी And जी जी preparedness cannot be done on your own. It has to be through a professional. And राइट सर in addition to being having a close relationship, I've experienced very professional approach by NCMA.
जी, जी, Very, very थैंक professional approach. Right जी, time, right checklists, everything. हुँ, You're enabled. You have हुँ, tools also. So the WhatsApp हुँ, group, that was a great help. So it was हुँ। a professionally personal approach, which I would put it that. जी, thank you so very much for your kind words, Thank you Ajay so sir, and much. for sparing your time. So with this, Yeah. once again, wish you all the very best for Kareeb. Thank you. भगवान करे हमारी बच्ची जो है वहां से कोटा से पढ़कर बहुत अच्छी डॉक्टर बने और सोसाइटी की हेल्प सर आपको नेक्स्ट बच्ची का भी करना है. करे. जी, Always जी. I'll seek guidance from you. Like I नहीं, said, no. this relationship is to stay. This relationship Yes, is to definitely. stay. So this relationship is just not only a professional relationship. Yes. So after the Yes. admission, it becomes a personal also. It will go forever. So we Thank you will so always much. be in touch with you, sir. Thank you so very much, sir. Thank you so Thank you. much, Have a Abhi. nice day, sir. Thank you, sir. Pleasure. Pleasure. Thank you. Thank you. Bye Bye-bye, bye. sir.